Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks logged marginal losses. Sensex falls to finish at 42,276. Nifty slips to settle at 15,740. Rupee weakens 8 paise against the US dollar and oil prices plunge on profit-taking and a stronger US dollar. घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 52,276 पर फिसला। निफ्टी 15,740 हुआ दर्ज। $1 की तुलना में रुपया 8 पैसे कमजोर हुआ और डॉलर मजबूत होने तथा मुनाफा वसूली से कच्चे तेल के दाम नीचे आए। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही, हालांकि प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों से प्राप्त कमजोरी के संकेतों पर बाजार में निवेशकों के बीच बिकवाली देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 53 अंक यानी 0.1% की गिरावट के बाद 52,276 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंक यानी 0.7% की कमी के साथ 15,740 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों में अपेक्षाकृत निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में स्मॉल कैप और मिड कैप का प्रदर्शन अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.38% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.93% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today ended marginally down and negative cues were there from the Asian equity markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange slipped 53 points or 0.1% to finish at 52,276. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 12 points or 0.07% to close at 15,740. The broader market at BSE, on the other hand, logged gains, performing better than the Sensex. The mid-cap index rose 0.38% and the small-cap index climbed 0.93%. In the Sensex pack, shares of 14 companies climbed while 16 logged losses. Tech Mahindra was the top gainer as it surged 2.5%, followed by ITC, which climbed 1.9%. HCL gained 1.8%, Infosys rose 1.7%, and Titan ended 1.6% up. In the list of companies which fell, SBI and HDFC both tumbled 1.2%, and Kotak Bank declined 1.1%. HDFC Bank plunged 1%, while Power Grid and ICICI Bank both fell 0.9%. In sectoral indices, shares of 13 out of 19 sectors climbed. The telecom sector stocks gained the most as it added 1.7%. IT surged 1.4% and tech climbed 1.3%. Healthcare and realty both rose 1%. In the sectors which fell, metal sector stocks lost the most with a fall of 1.4%. BankX declined 1% and the finance sector slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,837 companies gained while 1,366 fell. Shares of 141 companies remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 72 रुपए 89 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में
0.16% की बढ़त लेकर 90.10 पर पहुंच गया। सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार प्रमुख सूचकांक हालांकि थोड़े से घाटे में रहे हैं, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। किन अर्थों में ले रही पूरे कारोबार को आज के दिन का? देखिए, अब 3 हफ्ते से रैली चल रही है स्टॉक मार्केट में और मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी सांस ले रही है मार्केट और उसके बाद फिर थोड़ी सी ये बुलिश ट्रेंड चलता रहेगा। ये जो मार्केट्स हैं उन्होंने हालांकि कोविड का अभी असर है हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर। अभी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पूरा खुला नहीं है, रीजनल लॉकडाउन अभी चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है खुल रही है और स्टॉक मार्केट ये देख रही है। जैसे मैंने कहा, आज तो कम से कम थोड़ी सी सांस ले रही है मार्केट और आगे फिर मेरे ख्याल पॉजिटिव ट्रेंड पे चलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये देख रही है कि ये हमारी जो इकोनॉमी है ये धीरे धीरे खुल रही है और अनुमान ये लगाया जाता है कि अगर पिछली कोविड की जो सर्ज थी उसके बाद हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी मतलब नॉर्मलसी के ऊपर आ गई, तो अब भी ये मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी यही होगा। और दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी फेथ डाला है हमारे ऊपर। अब अगर आप देखें कि जून के पहले 4 दिन में और 5 दिन में 8,000 करोड़ का ये जो इनफ्लोज आए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, तो ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं इसका जो मतलब इंडिकेटिंग जो द फेथ इन द अपस्विंग इन द इकोनॉमी, तो इससे स्टॉक मार्केट को काफी हौसला हुआ है। और बाकी दूसरी चीज ये है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन बढ़ रही है और ये सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन फ्री हो जाएंगी, तो ये काफी पॉजिटिव इंडिकेटर स्टॉक मार्केट लेके इस वजह से बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जी Sushma, the broader market, as Manoj mentioned, continued its winning run today, notching up record closing highs. Yes. And we also observed that the benchmark indices were led by shares of banks and Reliance Industries as they saw profit booking after strong returns in recent sessions. Do you think the investors were mildly, I'm using the word mildly, disappointed by the lack of an economic package announcement in their Prime Minister's speech yesterday? I think, I don't think they're disappointed. In fact, I think they're looking forward to, there is still apparently an expectation of a stimulus package, I think, in the markets, even though the finance minister has said that, well, we should allow the budgetary measures to kick in. And there seems to be no indication as yet of a stimulus. But I think the market is still, holding out some hope that perhaps some new measures will come in. But even so, as I said, the markets are still banking on the fact that the economy will spring back to normalcy as it did last time. In fact, what is surprising is that the COVID, in the second surge, of course, the numbers went up very high, very steeply, in a most unexpected fashion. Even epidemiologists probably had not anticipated such a steep rise. But the decline is also equally steep. It's very, very interesting. And I think that the markets are taking that into account, that there is a very steep decline in numbers. I mean, if you see Delhi, we only have about 300 or 400 cases now, as against probably at the end of April, some 27,000 cases. So it's a very steep decline. So I think the markets are factoring into the fact that the regional lockdowns are slowly opening up. The economy is likely to get back to normal. Foreign institutional investors are still pumping funds into the country. And the fact is that, the rupee is still remaining pretty strong. So these factors cannot be denied just now.
So since we are on the broader market, it was observed today that the strength prevailed as in the broader market, as investors still chased the stocks in sectors that would benefit from reopening of the economy currently underway. The case in point is the power index, which really went to its highest level. So power, yes. Power is one of the first areas that is going to show when as the economy opens up. It's yes. one of the sectors that is the first probably to show that, economic growth or economic activity is going to, is being stepped up. So definitely, as I said, there's a very, very focused attention in the market. So for instance, tech stocks, IT stocks, they are the focus. Banking stocks, once again, because banking is, of course, the key, because so much of the new credit guarantee schemes, the schemes that are a bit offering funds to the MSMEs, then there is the privatization of banks. So a lot is happening in the banking sector. सुषमा जी, हम आपका ध्यान आज के कारोबार पर लिए चलना चाहेंगे और खास तौर से टेलीकॉम सेक्टर पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, जहां 1.7% की आज वृद्धि हुई है। दुनिया भर में जिस हिसाब से कह लें कि काम करने के तरीके में बदलाव आ रहा है, अपने यहाँ भी कह लें कि जो परिस्थितियां हैं उनमें बेशक लॉकडाउन खुलने के बाद स्थितियां बदलेंगी, लेकिन कामकाज करने का तरीका यानी टेलीकॉम आधारित रहेगा, आईटी आधारित रहेगा। ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर के प्रदर्शन पर आप क्या उम्मीदें रखती हैं? यह क्षेत्र कैसा निकल के आएगा आने वाले दिनों में भी? देखिए, टेलीकॉम क्षेत्र तो अभी ग्रोथ सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन हमें लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि और देशों में, जैसे अमेरिका में या चाइना में। तो ये मोबाइल फोन पेनिट्रेशन और हमारा पोटेंशियल बहुत है रूरल एरियाज में, खासकर मोबाइल फोन पेनिट्रेशन। अब मेरे पास इस वक्त उसके आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ये हमारी जो मोबाइल फोन नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप इन रिलेशन टू आवर पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है मोबाइल फोन। तो इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि अब हम बड़ी जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, 5G के ट्रायल्स आ रहे हैं, और ये जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे इस क्षेत्र का ग्रोथ होगा, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो मेरे ख्याल में टेलीकॉम इज डेफिनेटली एक पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है। Sushma, today the dollar index appreciated 0.16%. So how are you reading the movements on the dollar front? In the near term, do you see dollar to be in a stable range? Dollar, of course, yes, I would say that it is going to be in a stable range. You do have, right now, of course, the dollar is underperforming against several currencies, but I don't see any massive downgrading of the dollar in the days to come. Okay, and so Sushma, at the macro front, if we were to look at historically, we have seen that whenever there is a big crisis in the U.S., followed by expansionary policies of the Fed, emerging markets do see a ripple effect. How do you see this happening in the current scenario? Well, I already mentioned that, our inflows in the first week of June are very high from foreign institutional investors, which is obviously because of the very easy money policy, the quantitative easing, as you can call it, as it used to be called earlier. But there is an easy money policy just now, and that the printing of notes that's going on in the developed economies is the flow of funds are moving into emerging economies. Now, there is a perception that perhaps in the days to come, India may not look so attractive to these to the FIIs, and we may lose out as compared to other economies. But I think that there is still quite a bit of faith in India as an emerging economy, and the expectation
that we will rebound from this, decline of the first quarter of the current fiscal, that is April, May, June, and that by maybe July or August, we will get back to normalcy. And the potential again in India is seen as very large, and that is why the FIIs are, pouring funds into our markets. सुषमा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भारत का भविष्य है वो अपेक्षाकृत बेहतर है। यहाँ का जो बाजार है वो विशाल बाजार है। हम जो दूसरी लहर आई थी उससे पहले चर्चा अक्सर करते थे कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ का जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बनेगा या डब्ल्यू शेप बनेगा। अब तो हम डब्ल्यू शेप की ओर बढ़ते यानी नजर आ रहे हैं दूसरी लहर के बाद। ऐसे में जो एफपीआईज हैं उनका विश्वास और आने वाली जो आशंका है उसे ध्यान में रखते हुए किन किन क्षेत्रों में आप जो ताजा यानी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे विकास के अवसर बनते देख रही हैं, ग्रोथ के अवसर आर्थिक क्षेत्र में आप देख रही हैं? ग्रोथ के क्षेत्र मेरे ख्याल में काफी सारे सेक्टर्स हैं। एक की तो हमने अभी बात की, जैसे आपने कहा टेलीकॉम और आईटी तो बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया है। इनफैक्ट आपको तो मालूम ही होगा कि पिछले साल जब बाकी सारे क्षेत्र नीचे जा रहे थे, आईटी का क्षेत्र ऊपर जा रहा था और उनके जो टीसीएस के प्रॉफिट और इन्फोसिस के प्रॉफिट काफी हाई थे, क्योंकि सारी जो कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी वो आईटी के ऊपर ही निर्भर। तो एक तो आईटी है, और जैसे मैंने अभी कहा बैंकिंग क्षेत्र है। तीसरा अगर हम मेटल्स के पास जाएं, मेटल्स की बहुत डिमांड हो रही है हमारे देश में सिर्फ नहीं, बाकी के देशों में भी इसकी डिमांड हो रही है। चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जहां उन्होंने सरकार ने ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू की है, वहां पर बहुत पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल्स में भी वहां ये जो काफी सारी जो सेक्टर्स हैं जो पीएलआई स्कीम में एलिजिबल है, उनमें बहुत ग्रोथ की पोटेंशियल है। So I'm going to take you towards inflation, Sushma. What is the impact of the dovish and accommodative stance of global central banks on inflation, and how is India going to be faring vis-a-vis others when it comes to inflation? Well, I think actually our central bank has managed to contain inflation at manageable levels, despite the fact that we have the impact of high oil prices, the pass-through effect of high oil prices, plus the fact that there has been a seasonal increase in food prices. So, despite that, the central bank has been able to manage inflationary pressures pretty well, and this is something I think that that has been a great plus point for the economy at a time when everything else in the economy seems to be, barring the stock market and the rupee, everything else is going downwards. So this is has been quite a feat, and I think it is to the credit of the Reserve Bank. But today they have this focus on inflation. They have managed to contain it within manageable limits. Sushma, but today the Asian stocks sparred all the gains, and they were very cautious ahead of the U.S. inflation data. Yes, U.S. inflation data, of course, is so it will have its repercussions on India as well? It will have its repercussions on India, but then we need to view inflation data of the U.S. in a different way, because for them, even a very marginal increase in inflation is significant. For India, it is not. I would not expect that we will have any great ripple effect from the U.S. into India. Okay. आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज बिकवाली तेज रही। जैसा कि अभी अभी राजेश जी ने कहा कि अमेरिका में मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े आने हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है बाजार पर। वहीं इस सप्ताह
यूरोपीय मौद्रिक समिति की नीतिगत बैठक होने वाली है। इन दोनों से पहले एशियाई शेयर बाजारों पर आज निवेशकों के बीच सावधानी की धारणा देखने को मिली। कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.2% घाटे के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की कमी आई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% घटकर बंद हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो समाचार लिखे जाने तक वहां तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4% की बढ़त पर कारोबार कर रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.1% की वृद्धि थी। वहीं फ्रांस का CAC 40 भी 0.3% ऊपर चल रहा था। The Dow and the S&P 500 ended with losses yesterday. However, both stocks remained within 1 percentage point of their record closing highs. Investors showed cautious approach after the news of a global minimum corporate tax rate, lingering inflation fears, and a lack of market-moving catalysts. The Dow and the S&P fell while the Nasdaq closed with gains. The Dow Jones Industrial Average fell 0.4% and the S&P 500 slipped 0.1%, while the Nasdaq Composite Index gained 0.5%. Sushma, quickly, in the U.S., as I just pointed out, both the government and the Fed are trying to make the recovery more inclusive, and they want to be sure that the low-income segment is on board in terms of job opportunity. So are you expecting inflation numbers to be higher in the developed markets? Yes, inflation numbers. You gave us a perspective of India, but I'm talking about... Yes. Inflation numbers, yes, definitely will be higher because of the kind of easy money policy that they are following and the stimulus, the huge stimulus that they have, unleashed. And the fact that also they have, this is another system that they have as part of their stimulus is to send, direct, what we would call in India, direct benefit transfer, checks directly in the hands of people to stimulate consumption. And that is obviously bound to push up inflation in this country. And one can expect it, but of course, the central bank over there, the Fed, has said that I don't think they're going to lose sight of their policy to revive the economy, and they are not going to probably be deterred by any marginal increase in inflation as a result of these measures. Okay, moving on, the Food Corporation of India, FCI, has supplied 69 lakh tons free food grains to all states and union territories under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Consumer Affairs Ministry said 13 states and union territories have lifted full allocation for May and June this year, while 23 states and union territories have lifted 100% food grains May allocation. In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi had yesterday conveyed the decision of extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana 3 till Deepavali. Now, more than 80 crore people will continue to get free food grain every month till November this year. Under the scheme, 5 kg free food grains per person per month is being distributed to beneficiaries. The central government will bear the entire cost on account of such distribution, including food subsidy, intra-state transportation and dealers' margin, without any sharing by states and union territories. The government has sensitized all the states and UT governments to complete the distribution of free food grains under the scheme in time-bound manner. यानी एक ऐसी योजना जिसका लाभ कह लें कि समाज के एक वृहत तबके को मिल सकेगा और दिवाली तक लगातार मिलेगा। एक कल्याणकारी योजना इसे हम कहें जो कोविड आपदा से लड़ने में अर्थव्यवस्था को मदद करेगी, यह योजना। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और इसका जो एक्सटेंशन किया है ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है सरकार का।
कि दीपावली, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं ये सेकंड कोविड सर्ज की वजह से जिन लोगों को वापस नौकरियां मिल गई थी, माइग्रेंट वर्कर्स भी आए थे और सैलरीड वर्कर्स भी, जिनको वापस नौकरियां मिल गई थी जनवरी से और फरवरी में, अब उनकी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल और मई में फिर वही तकलीफ आ गई उनके ऊपर। और ये मेरे ख्याल में बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो तकलीफ है ये वहां पर पहुंचेगी। ये फूड ग्रेन्स का जो फ्री फूड ग्रेन्स का सिलसिला है और ये मतलब ये जरूरी, ये बहुत ही पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट मेजर है। Moving on, oil prices today extended losses on profit taking and a stronger US dollar. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $70.80 per barrel, while WTI crude prices were around $68.50 per barrel. Sushma, the overall optimism about strong demand recovery will check the fall of oil prices. Do you agree? Well, not fully, because I feel that in the months coming forward, weeks and months coming forward, you're going to have several developments. Number one is that Iran oil is likely to come into the market as and when the sanctions are lifted by the US, and negotiations are currently on for that. And the other thing is that demand is likely to be rather uneven globally because of COVID surges which are still continuing around the globe. So demand is not going to increase consistently. So I would envisage that there would be some volatility in prices. You would see them probably rising and then falling. So perhaps not a consistent rise in prices. सुषमा जी, जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हैं और दुनिया भर में जो हम अनलॉक की प्रक्रिया देख रहे हैं, कई यूरोपीय देशों में स्थितियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं, तो कुछ स्थानों पर सीमित लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। ऐसे में तेल के दाम किस दिशा में जाते देख रहे हैं और खासतौर से भारत के लिए तेल का कौन सा स्तर बेहतर रहेगा? देखिए, मैं आपका जो दूसरा सवाल है मैं पहले इसका जवाब दूंगी। हमारे लिए जो $70 के ऊपर या $65 से ऊपर जो प्राइस है वो हमारे लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं है, हमारी एक्सचेकर के लिए मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी 80% हमारी जो जरूरत है हम बाहर से लेते हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल समझ लीजिए मैनेजेबल लिमिट है वो मेरे ख्याल $65 है। हाँ, इस वक्त हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं बहुत अच्छे हैं, तो अगर इस वक्त कुछ महीनों के लिए बढ़ भी जाए तो हम मैनेज कर सकते हैं। इस वक्त अभी RBI गवर्नर ने ही बताया कि $600 बिलियन रिजर्व हमारे हो गए हैं। तो ये तो एक बात हुई। तो बाकी अगर आपने कहा कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो बढ़ते दाम की जो स्थिति है, मेरे ख्याल ये मतलब कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ वजह ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि ईरान का तेल मार्केट में शायद आ जाए, और डिमांड अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, लॉकडाउन आप देखिए यूके में फिर लॉकडाउन होने जा रहा है। जी सुषमा जी, बस यहीं पर हम संक्षेप में कह लें कि आपसे अनुमति लेना चाहेंगे इस सवाल पर। थैंक यू सुषमा। और श्रोताओं की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। अंत में सोने का हालचाल आपको बताते चलें। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य ₹70 बढ़ा, 49,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 250 रुपए घटी, 71,570 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गए। Before we close the headlines once again, domestic stocks log marginal losses. Sensex falls to finish at 52,276. Nifty slips to settle at 15,740. Rupee weakens 8 paise against the US dollar, and oil prices plunge on profit taking and a stronger US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.